बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। इसके लिए सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे 4 कप मैदा ले रहे हैं। वन टेबल स्पून खमीर, हाफ टी स्पून नमक, वन टी स्पून काली मिर्च, 2 टेबल स्पून शुगर, और इसमें ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून ऑयल। इसमें अब 2 अंडे डालेंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। गर्म पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। डो ज़्यादा ना बहुत पतली हो और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त हो। डो को अच्छी तरह से गूंद लेंगे और इसको कवर करके आधे घंटे के लिए रख देंगे। अब हम चिकन फिलिंग तैयार करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए हाफ kg चिकन बोनलेस, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, में डालेंगे 4 टेबल स्पून दही, दही डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून विनेगर डालेंगे, टेबल स्पून चिकन टिक्का मसाला। आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। वन टीस्पून नमक, ऑयल लेंगे और चिकन को इसमें शामिल करेंगे और दरमियानी आंच पे पानी के खुश्क होने तक पकाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि इसमें पानी खुश्क हो गया है। अब चूल्हे को बंद कर देंगे। पिज़्ज़ा बनाना हो, मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा मेकर यूज़ कर रही हूँ, तो इसको हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। डो को हाथ की मदद से अच्छी तरह फैलाएंगे।
पिज़्ज़ा सॉस मिला देंगे। अब थोड़ी सी हम मोज़रेला चीज़ को भी कद्दूकस करके डालेंगे और चिकन को ऊपर से हिला देंगे। अब प्याज को हम जूलियन कट में करके और शिमला मिर्च और टमाटर और प्याज सब इसमें ऐड कर देंगे। मोज़रेला और चेडर चीज़ को कद्दूकस करके ऊपर से सही तरह से फिलिंग करेंगे। और सबसे आखिर में ऑलिव्स से डेकोरेट करेंगे। अब हम पिज़्ज़ा मेकर में पिज़्ज़ा को 15 मिनट के लिए बेक कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पिज़्ज़ा बहुत अच्छा से तैयार हो गया है। आप सब भी ट्राई कीजिएगा और जिन्होंने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया भर की तमाम खुशियाँ नसीब करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।